Hello everyone, welcome. Good evening everyone. I welcome you all. Hello Kathleen. Hi Ashutosh. Welcome everyone. Welcome to the live session. Hello, welcome Shobha. Hi. Hello ma'am, good evening. Am Hi, I audible? Ankush. Hi ma'am. Yeah. Yes, it's okay. Yeah. Ma'am, my voice is clear? Yeah, you're clear, you're clear. Okay, ma'am, you too. So, first of all, good evening and Jai Hind. I welcome you on this platform of SSB Online Theory. My name is Ankush Kumar, and today I have invited you to briefly tell my students about SSB preparation, that how you did your preparation, you are also um uh, this Fauji brat. I think your dad was in Air Force, and meanwhile I am also Fauji brat. I did my schooling from army school. So what effect, what impact it created, like uh, you joined army as a captain, and how, basically please tell them that how you did your preparation. Sorry, I was just closing the window. There was a lot of Sure. noise coming from. Yeah. Yes. So, Ankush, could you please repeat the last part, what you were saying? Ma'am, I was telling you, just briefly cover up this that how this SSB, how you did your SSB preparation. I hope my voice is clear, ma'am. Yeah, it's clear. I'll request you to be a little louder, Ankush, because I'm not wearing my headphones today. Okay, fine. So, ma'am, I was asking you that please tell them that how you did your preparation, you did graduation, then from which entry you were, and basically tell them that how you prepare for SSB, whether you did a coaching or whether you did your preparation by self, or you interacted with your seniors who are already in the academy, like that. Okay. So, hello everyone. Hi Ankush. Thank you for having me here on SSB Online Tayari. It's a great initiative. And so, how I was, to cut it short, my father was in the Air Force, as Ankush just mentioned. We are both army. We are both defense brats because Ankush's dad was in the army. While growing up, that influence of forge defense was always surrounding me. You know how we look at our fathers going on TV and coming back with toffee, biscuit, whatever they could, like after 1 month, long 10 years. So that was of course a very important part of my life while I was growing up only because of course I am a Fauji kid. It became like my passion because I loved my father so much that even I want to wear a uniform. And so that's when this whole process of the mind, I started preparing mentally. First, it was like a dream, it was attraction, then it started becoming a determination. And I was always attracted towards the army because I was like, okay, I've seen Air Force life as a child, but when I would like to join the army as an officer. And so when I was in college, I was studying in Delhi University, and I took English honors, and I joined NCC Army Wing. So everybody was like, "अरे, are you crazy? तुम दिन भर गेरू पोतते रहोगे वहाँ दिल्ली कैंप में जब camps लगेंगे. It's very difficult for Army Wing." And I like that's what I want to see if I can do it or not. And yeah, so I joined NCC and I was like, I started running very fast. I started coming over my limitations. I was this lazy child, youngest in family who was just always eating sandwiches and just heavy and hardly studying. And suddenly NCC started changing my life. There I was being given responsibilities as a student, NCC student, and I'm like, wow, even I'm getting responsibility. It started just changing my personality. I became responsible, and I was okay. I'm coming first in running, and I was like, I can do it. That confidence started building in.
So confidence. The first thing when you go for your SSB is your confidence. The reason that despite of hardly having any physical activity before NCC, I could come first, I could do a lot of things and challenge my limits was because I started having confidence. You know, people around me, जो मेरे साहब लोग होते थे NCC में, और हम 4-5 लड़कियां जाती थी कि and they were like हम बनेंगे ऑफिसर. So they used to like look at me, my saabs, they used to look at me and say कि, and I was very quiet mostly. I was a very quiet person, like wanting my peace in life and all. And he was like, तुम लोगों का नहीं पता, but ये जरूर बनेगी ऑफिसर. And I like, अरे मतलब, that gave me so much confidence that my instructor is telling me that and इतना भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं. And second year, of course, I was ready to. I made up my mind that this is what my career is gonna be. I'm gonna be an army officer, and I started preparing for CDSC because, as I said, I was in Afwa Girls Hostel, Air Force Girls Hostel. My father was in the Air Force, and so everybody was talking about it. Oh, it's so nice, it's so glamorous, and I was like, no, I don't want to, look at others and say it's so amazing to be an officer. I want to wear that uniform. I'll become an officer myself, I don't want to get married to an officer. That's not my dream. I'll become an officer. I was so passionate about the uniform looking at my dad. And so I started preparing for CDSC. And I cleared my CDSC exam. So I'm presuming since we are talking about SSB preparation, I'll skip that part. Yes. So the CDSC preparation started. My friends from the army helped me because they had cleared CDSC. I had a senior, his name is Virat, and he really told me what these were the books I used. I prepared day and night for 3 months. मतलब मैं बस पढ़ाई करती रहती थी. Unfortunately, हम लोगों के कॉलेज के टाइम में Instagram, Facebook ये सब चीजें नहीं होती थी. So it was even easier to concentrate. And मेरा मतलब ये था कि I was completely focused. एक कोई चीज मिल गई तो hangout का सीन नहीं था अपना. सिर्फ English ऑनर्स पढ़ने का था. तो जब मुझे वो बुक्स दी मेरे सीनियर्स ने, मैं उन पर टूट पड़ी. I was like, ये बुक्स एक बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ बिना घबराए हुए कि कैसे इतनी मोटी बुक्स. और बस दिन भर पढ़ती रहती. और वो लोग भी मुझे फौजी फोन से करके चेक करते रहते कि उठी है, पढ़ रही कि नहीं. फाइनली मेरा कॉल लेटर आया एसएसबी के लिए. मतलब नहीं, नॉट एसएसबी के नहीं, सॉरी. फाइनली आई क्लियर्ड माय एग्जाम एंड देन आई हैड टू अपियर फॉर एसएसबी and I had to go to Allahabad SSB. I cleared from 11 SSB. First thing, I even spoke to my father, Ankush, before I came live with you. Ki, Papa, if you want to give some tips and whatever. So, simple things, simple things first. You be free, be confident, friendly, and helpful. Be cooperative. Help the other people, do it together. If it's not an individual task, then do it together. When there's command tasks, whenever your other SSB mates need your help or anything, do it together. Because if you want to join the army, you cannot win a war alone. You cannot capture a hill alone. You cannot, get to the vantage point alone. So first of all, this me, and that thing that I'm the best, get it out of your heads. You are nothing alone, So when I went for SSB, even if I was very quiet and everything, but when all the girls, they really started liking me because even if I was quiet and not talking much, but I was very cooperative. I was very helpful. If somebody, and not like I was faking it or something. This is part of OLQ. You need to really feel it. Even if we are competing together, whatever, at the end of the day, she is also human being, he is also human being. And if we do get together, nothing like that. Just because I'm helping her, it will not make me worse. So be confident. Don't get stuck on things like English nahi aati, हम smart नहीं हैं, या हम overweight हैं. अगर आपका वेट फिर भी कंट्रोल में, तो आपको अगर टेम्पररी रिजेक्शन मिलेगा भी मेडिकल में, तो यू विल स्टिल गेट टाइम टू लूज ऑल दैट वेट. सो बी ओपन माइंडेड, डोंट बी नर्वस, बिकॉज अगर दिमाग में यू आर नर्वस, देन आधी चीजें यू विल मेस इट अप आउट ऑफ योर नर्वसनेस. Exactly. अब भले ही जैसे SRT आता है, तो देयर विल बी सम लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आई डोंट रिमेम्बर हाउ मेनी,
बट बिल्कुल फोकस लाइक ओके क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है कि आई एम ट्रैवलिंग बाय ट्रेन आई गिव एन एग्जांपल देयर विल बी सम 200-300 क्वेश्चंस फॉर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एंड यू विल बी गिवन मे बी अ मिनट पर क्वेश्चन not more than that or 30 seconds. I don't know, Ankush would know better what is it because I don't remember now the timings and all. Ma'am, So 60 SRT and 30 minutes. 60 SRTs And 30 minutes. 30 minutes. So I attempted all of them, Ankush. Oh, great. And That's I great, did ma'am. all of them. Yeah, because I was just बिल्कुल अर्जुन की जैसे मछली की आंख पे अर्जुन का था फोकस एकदम वैसे मेरा इधर उधर कहीं ध्यान ही नहीं कि कौन क्या कर रहा है बाकी लोगों का हो गया क्या पेपर कहाँ है आई वाज लाइक अच्छा पहला क्वेश्चन है आप ट्रेन में जा रहे हो और आपकी सीट रिजर्व नहीं है और टीटी आया और उसने बोला कि अच्छा इधर यू पे बाय मनी और व्हाटएवर और यू गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन हाउ विल यू डील विद इट लाइक सपोज यू सपोज आपको इमरजेंसी में यू आर अ फौजी एंड यू हैव टू ट्रैवल समवेयर एंड you could not get your ticket done. That is the situation. And the TT comes, and so how will you do it? Like, so either you will start fighting, you will start arguing, or what? No. So the simple answer is ki I'll give him a check. Nobody has told you ki you check is not the mode. You have to use your brain. If I can't do today, you can say I'll do Paytm, I'll do net banking. We didn't have all this like 10 years back. They have all come up like some time back only. So दिमाग ठंडा रखना है फोकस आपका जब ऑब्स्टेकल टेस्ट भी हो रहा है टेक वन ऑब्स्टेकल एट अ टाइम डोंट थिंक कि अरे यार ये तो 14-15 इतने डिफिकल्ट ऑब्स्टेकल्स हैं और मैं टाइगर जंप पे कैसे कूदूंगी एंड टाइगर जंप इज लाइक आप ऊपर चढ़ के वहां से कूदना पड़ता है एंड फिर रस्सी पकड़ जाओ 10 फीट ऊपर मुझे नहीं आता था मैं ये सब नहीं करती थी कॉलेज में मैं एक नंबर की पढ़ाकू थी अपने हॉस्टल के रूम में बैठ के पढ़ती रहती थी बट मुझे ज्वाइन करना था एंड आई हैड मेड अप माय माइंड कि मैं करूंगी रिजल्ट के लिए मैं वरिड नहीं थी बट आई न्यू दैट आई एम गोना पुट इन 100%. तो ऊपर हम गए और फिर वो 10 फीट की वॉल पे चढ़े और सामने ऐसे रस्सी लटक रही है मोटी सी कोई ट्रेनिंग नहीं कुछ नहीं नॉर्मल बच्चे गए हुए एंड यू जस्ट जंप एंड ग्रैब इट एंड स्टिल हैव कॉन्फिडेंस कि आप उससे फिसल के ना गिर जाओ नहीं तो आपके हाथ ऐसे फटेंगे कि आप बाकी तो ऑब्स्टेकल भूल ही जाओ मतलब 1 महीने तो आपके हाथ लगेंगे रिकवर करने में सो यू हैव टू हैव योर नर्व्स अंडर कंट्रोल दैट्स इट आप ऑलरेडी सीडीएस का अगर एग्जाम क्लियर करके गए हो यू ऑलरेडी क्लियर द रिटन एग्जाम यू हैव अगर आप टेक एंट्री से गए हो आपका ऑलरेडी वो परसेंटेज है कि आपको एसएसबी का कॉल आया है SSB is all about keeping your nerves under your control and cooperating with each other. Right, ma'am. And using common sense. SSB is, you don't have to be over smart, you don't have to be Keen Kumar. जोश और होश दोनों से काम लेना है. उसके बाद कमांड टास्क ऑलरेडी बैच चल रहा था आई थिंक 15-20 डेज का 4 दिन के लिए मैं गई तो मुझे कमांड टास्क के बारे में ये सब पता चला कि अच्छा वो मुझे याद नहीं है वो लकड़ी ऐसे रख के फिर ऐसे जाना होता है पता नहीं क्या है वो अंकुश विल गाइड यू बेटर सो ऑल बट व्हाट आई रिमेम्बर इज कि वी डिड इट टुगेदर एंड कमांड टास्क में सबसे अच्छी बात मेरे फेवर में ये काम हुई कि जो भी गया था अपनी टीम अलग अलग कमांड टास्क करने दे ऑल कॉल्ड फॉर मी टू हेल्प देम सो उससे फिर एक लीडरशिप की क्वालिटी बाहर आई जो मुझे बाद में पता चला कि अच्छा ऐसे इन पैमानों पे आपके मार्क्स मिलते हैं तो दैट इज बिकॉज ऑल दोस माय एसएसबी मेट्स दे फेल्ट कॉन्फिडेंट कि मैं उनकी मदद कर पाऊंगी मैं सेंसिबल डिसीजन दे पाऊंगी या फिर व्हाटएवर सो दे ऑल कॉल्ड फॉर मी मुझे याद है ऑब्स्टेकल ट्रेक करते टाइम ऑब्स्टेकल टेस्ट जब हो रहा था 2 मेरी कोलीग्स थी वो गिर गई थी टार्जन जंप से एंड उसके बाद सबसे पहले मेरी बारी थी एंड जब मैं टार्जन जंप वाज द लास्ट ऑब्स्टेकल और ऑलरेडी मैं बैलेंस बीम से गिर के उठ के फिर भाग के सब बरमूडा ब्रिज वगैरह करके देन आई रीच दिस टार्जन जंप और मैंने देखा रेत बहुत कम है तो मैंने मना कर दिया कूदने से मैंने कहा बहुत ऊंचा है सर आई टोल्ड माय इंस्ट्रक्टर I don't think I should be doing it. I will not do it.
So all my SSB mates, they got very this thing, ki, "Arey yaar, this will go against you. How could you say no?" But no, that's not what happened. I judged it properly that the situation is not okay. And after me, 2 of the girls, they ended up having compound fractures. So you have to judge the situation. You know, you really have to judge it when you're right there, your presence of mind. It's all about your presence of mind and what will be your natural reaction to a situation. क्योंकि कल को अगर आप बॉर्डर पे जाओगे और एम्बुश अगर किसी ने लगा रखी होगी उस टाइम आपकी ट्रेनिंग तो जरूर और वो ट्रेनिंग ऐसी कर देते हैं कि वो आपका एक सेकंड नेचर बन जाता है. यू नो दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम, दैट योर trainers will train you in the academy. But presence of mind. कि एकदम ये नहीं, ओ शिट क्या हो गया, क्या करूं, वो शिट मैं तो गिर गई, क्या करूं. नो, नॉट दैट. डजंट मैटर. गिर गए, उठो, अगला ऑब्स्टेकल ठीक से करो, बी कूल एंड स्टिक टू द टाइम लिमिट. यू नो दिस भगवान, ओ मैंने इंग्लिश का वो गलत ग्रामर गलत बोलकर आ गई, ओ क्या सोचे, कुछ नहीं यार, मतलब आंसर सही था ना. Right. What you said, it made sense, right? You could convey ना टूटी फूटी इंग्लिश में. बाद में जब जाके ऑफिसर बनोगे अपने आप अंग्रेजी सब ठीक कर देंगे. ठीक है, तो वो ये सब चीजें ना बाद में जो होगा उसका सर्दर्द मत लेके बैठो. Yes, ma'am. Exactly. अपना keep your mind very cool. SSB में जैसे you know मेरे फादर भी गए थे, वो सिविलियन बैकग्राउंड से थे. Okay. But what worked for him? He was just cool. He had cleared his written exam. He used his presence of mind. And ये मैं कम से कम 30-35 साल पहले की बात कर रही हूँ. And आज भी वो change नहीं हुआ है. कई लोग होंगे ग्रुप डिस्कशन वगैरह में they will start jumping कि you know मेरे को पता है कैसे देश ठीक करना है. किसी को नहीं पता कैसे देश ठीक करना है. इतनी चीजें हो रही है. नो, none of us know. We are all like trying to find ways. So जब group discussion is going on, आप ये देखो कि जो डिस्कशन से बातें निकल के आ रही हैं, उसमें आप लॉजिकली उस डिस्कशन को कैसे एक पॉजिटिव तरीके से, किसी को नीचा नहीं दिखाना है ग्रुप डिस्कशन में. एक ऑफिसर, एक फौजी I won't say ऑफिसर, एक फौजी का निशान ये होता है कि ठीक है अकड़ होती है क्योंकि हम बहुत टफ ट्रेनिंग करते हैं, ये होते हैं, वो अकड़ आ जाती है नेचुरली, जबरदस्ती कोई नहीं करता. लेकिन एक फौजी की निशान ये है कि वो किसी को नीचे गिराता नहीं है. Right. वो हाथ पकड़ के उठाता है. Exactly. और साथ में लेके जाता है. Exactly. So don't start telling your SSB mates or making faces कि what a bullshit thing. No, like respect each other, and a leader is somebody who will tell people the right things if he disagrees and try to join them also to his cause. You know, so that's the thing. When you go for SSB, first of all you should be very excited and congratulate yourself that we have come to SSB Center. Like wow, that itself is an achievement. You know, when you see that board, welcome to Allahabad SSB. Right. That itself is like wow, you just पहले तो 1-2 मिनट खड़े होके ना enjoy that moment. Yes, right. कोई भाई नहीं है, कोई जल्दी नहीं है कि अरे चलो भागो इम्प्रेस करना शुरू करो. किसी को इम्प्रेस नहीं करना है. पहले एंजॉय करो, अंदर जाओ, खुश फील करो. Oh God, we are finally here at SSB Center. Enjoy that thing when you step that zameen of SSB Center, and just get the feel of that place. Get the feel. Settle down with your colleague, SSB mates, and chill a bit because अगले दिन सुबह से आके डबरा पट्टी शुरू हो रही है. Just relax, like soak it in. That's it. Yes, You need to be cool-headed. Officer or fauji is not कि गए और बस धावा. No, that's not it. You're an officer. You're a fauji. You have to think from your head. First, you become a fauji in your head. Plan. Then think of conquering, attacking, and doing the tactical movements. Plan it out with a cool head. That's what it is. Exactly. Ma'am, I also want to add something like you told earlier that on 12th of November, I went to SSB Allahabad only. My SSB was at 14 SSB Allahabad, and
that moment, like when we were taken from MCU to green bus, then we were going to the SSB Allahabad. So the thing was, I was feeling like I am going to army school. The same Yeah. moment, because Yes. daily we used to use that green bus to go to school. So like then when we entered to the SSB, then I started feeling that I am at SSB school, and that Yeah. moment is amazing, right? You are right, ma'am. Like we need to feel that moment. That is very necessary, Yes. and enjoying the Yes. process, enjoying the moment where you are. Enjoy the moment. Yes, You're that is. here, finally you made it to the SSB center. Like everybody wants to see SSB, in the country because it's such a thing. And you're right there. Going to live there for like 4 5 days and make some friends, or like there were some of my SSB mates who didn't make it with me, but they joined later on. But we have that connection. So live that moment, live those times, and hello Akshay, enjoy it, like let it sink in you. हवा फील करो, वो अभी वैसे भी विंटर्स का टाइम है और मजा आएगा जाने में. थोड़ा सा मतलब just be careful a bit कि balance beam अगर भी dew drops होते हैं तो don't slip and all, and even if you slip, get up and finish the other obstacles, because I had also gone in winters and I had slipped, मैं balance beam से गिर गई. So then I got up and I finished the rest of it and everything, and my merit was sports all over India. That's great. Yeah, like, so it's not that oh shit, I fell from balance beam. Oh God, I said that the Tarzan jump is not okay. No, it's about they only see your presence of mind कि उस सिचुएशन में आपने कैसे रिएक्ट किया. अगर आप गिर गए, ऐसा नहीं कि आपको गिरना अलाउड नहीं है. हमारे कितने सारे जो भी 4 4 गोली खा के भी मारते रहते हैं टेररिस्ट को. ऐसा नहीं कि वो गोली लग जाए तो वो अलाउड नहीं है, लेकिन गोली लगने पे आपने क्या किया. आप वहां से अगर बच के निकल सकते थे, नंबर 1 बच के निकले कि नहीं निकले, और दुश्मन को हरा के या जो भी अपना टारगेट कॉन्कर करके आपने अपने साथी को बचाया कि नहीं बचाया. उसको खींच के अगर आप लाने के उसमें थे तो आप उसको खींच के लाए कि नहीं लाए. आपका रिएक्शन क्या है सिचुएशन. Right. That's what it is all about. Your presence of mind. Yes, ma'am. So we have done with 22 minutes now. I think half an hour, more than half an hour is left, or 1 hour. Now I think, ma'am, we should take question and answer. Like we should clear the doubts for the students. Yeah, sure. Yeah, I get a lot of questions, Ankush, and I was looking forward to this conversation because, on a common portal, we can address more people. Yeah. Right. So all of you can shoot your queries over here, one by one. Okay, please ask your doubts in the question section. I hope the question section is active. Yes, question section is active. You can ask your questions in the question section. Yes. One student was asking about that how we can do CDS preparation, CDS written preparation. Mm-hmm. Okay. So, from my side, all you have to know about serious preparation is that get the relevant books. As I mentioned, I studied from Arihant and from CSR. Okay. Then I also had Manorama yearbook for general knowledge, because general knowledge is something they can ask you questions from anywhere, any aspect and whatever. So you need to know last 10 years ka GK. Okay. Read newspapers. I understand that there's a lot of useless stuff in the newspapers today, but read things about government policies or what has happened in the 10 years. When was the last Olympics? Where was it held? Sundar Pichai is CEO of Google. Know these things which keep coming in the news and which have been recorded in the past 10 years. GK. English, get a Ren and Martin book. Apart from your CDS book. For English, you must go through the basic grammar before you appear for CBSE examination. Okay? So do that. English and GK. Go through extensively. So फिर उसमें साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जो क्वेश्चंस आते हैं 10th 11th लेवल के, वो मेरे ख्याल से जीके में ही वो कवर हो जाता है.
नहीं या तो उसका एक अलग सेक्शन होता है, वन इज जीके, वन इज इंग्लिश, एंड देन जो साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली, उसका एक अलग सेक्शन होता है. सो बेसिक 10th 11th के जो क्वेश्चन, आई थिंक यू विल रीड इट इन दैट CDS book only. They will give you those science questions and everything, the CSR and Arihant. They will give you the science questions there कि किस तरह के science से related questions आते हैं, because a lot of people from non-science background also appear for CDSC. So ज़्यादा साइंस की किताबें उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं है. आपको CDS की बुक में जितने साइंस से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, just finish all that. That's it. Finish that book twice, at least twice. You must revise. Without revision, it's useless, almost next to useless. Finish the book, revise it. English के लिए extra study GK from Brennan Martin, and sorry, not GK. English के लिए study grammar Brennan Martin, and GK के लिए get one Manorma yearbook and whatever else you can get hold of. Okay. One student is asking, ma'am, in my left hand there will be an extra finger in my hand. So is they affect my medical? I'm not sure. Okay. Okay, Sahil, I will let you know about this query because I'm in touch with one medical officer. So I will let you know. Okay, please message me on my page. Okay. Yeah, I'm not sure about the medical aspect. Yeah. Another question is, tell us how you prepare for stage 1. Stage 1 as in like what? Stage 1 is like PPDT, the screening part. The Screening part, PPDT, picture perception and discussion test. oh, Stage picture perception. Yeah. Picture perception is something, yeah, Ankush, you have to remind me also. Pictures perception, Sure. I did not really prepare much. Okay, I'll tell you. Are you back? Yeah, I lost you for some time. Okay. So picture perception, I'll continue with picture perception part. So basically the thing is, it's all about your psychology. Okay. So when they will show you some big sketches on a big screen and a projector and all, even if it's like the saddest of pictures, it might look like that somebody's dying in it or whatever. You should always, so through picture perception, they basically see, can you see silver lining in the darkest of clouds or not? So even if there's some very pathetic or a sad picture, or you see beggars in the image, or you see somebody's dying in the image, they will check whether you can still see the silver lining in the darkest of clouds or not. Yes. I remember during the picture perception, I had a picture on the projector where there was this young girl, and she had a dead body, like an old father's body in her lap, and she's sitting and like crying. Okay. Okay. And the story I wrote for that, I still remember it because it was like a sudden shocking. The moment that picture came, I like, oh God, what is this? And then, yeah, I'm like, इसपे क्या positivity देखूं मैं? And then I was like, okay. So what I wrote was that this girl and her father, they were running a theater, and they performed Shakespeare's Othello, and it received a great review from people at the last shot when Othello played by the girl's father. And whatever, and the theater was resurrected and they did very well. Something positive. So the thing was, because I was from English honors and a literature background, I immediately thought of Shakespeare play and a theater. Okay. So reading apart from your textbooks will really help you in opening up your mind. They can show you like some injured people like, or and a fallen train and injured people. So then you can always say that
at least they did not die. Something on those lines. You Yes, know, ma'am. Right, you right. you have to keep, yeah, that there was this accident going to happen, but because of the timely action of the train driver, the people were saved and they could go home with minor injuries. Right. Yeah. So you Yeah. just for picture perception, you have to see you have to see the positive and the silver lining in the darkest of clouds. That's the thing. Yes, ma'am. Right. There's a question, Ankush, ma'am. My friend attempted serious trials, but she couldn't crack it, and now she gave up. How can I motivate her? Mhm. Okay. How can I motivate her? Have you cleared your CDSC, or are you planning to appear for CDSC? That could have motivated her. You could have made her study with you. Exactly. If that is, yeah, if that is not the case, if you're not appearing for CDSC, you need to have a chat with. Yes. When our friends go through bad phases or when we go through bad phases, what happens is that instead of listening to us or instead of we listening to our friends, we start telling them, "Tu na aisa kar, tu na waisa kar." But you should listen to them. What is she going through? What is she feeling right now? What is her disappointment? Yes. So listen to her, and then only you can accordingly motivate her. What does she feel? She feels unsure about her future. Does she feel she will never join the army? What is it that is playing on her mind? Yes. First, understand that, and then address it, and let her, let her grieve for some time. Let her be like. Right. It's yeah, it's okay. It's okay to identify that you're sad or whatever rather than escaping. Yeah. Cavity in teeth matters in medical. What? Cavity in teeth matters in medical. Cavity? Yeah. I don't think so. You can Yes. always get it out. Yeah, get a filling and all that stuff. Cavity से Right. कोई फर्क नहीं पड़ता. There is a question कि मेरे SSB number में कोई फर्क नहीं है. Ma'am, I'm preparing for Indian. I do not play any game in national level. And no. Are you crazy? They don't want sports persons. They want army officers. Right. You can always join the national team after joining the army, Sahil. You can Yes, ma'am. always Major Dhyan Chand was an army officer and he led the Indian hockey team. Ma'am, am I audible? Yeah, Yes. Yes. Right. So, yeah. yes, ma'am. Coming to the next question, ma'am, what can be good answer when interviewing officer asks, "Army is all about legalized killing." Then if I would have been there, wow, I'm enjoying it. It feels like I'm back to SSB. If I would have been there, I would have said, sorry, if I had to kill for my country, I wouldn't have even cared about legalized killing. I would have just killed if it was for my country. Right. Great, ma'am. Great. If they ask if inequality exists among women, what would be your answer? Is it specific to gender bias or inequality boys and girls? Huh? She asked inequality exists among women. So I think it is a gender bias among girls. Yeah, gender bias. So see, Mehra, gender bias is everywhere. I was mentioning it somewhere else also. For whatever reasons, and it's not just in India, it's just little worse because we are still a third world country. But it's there in US also. It's everywhere, and for that, education is needed.
And till the time that education from childhood is not implemented in boys and girls and the society and everything, and you are already a grown up and you still have to deal with the society with the bias and all, then bunch of Jhansi Ki Rani. Right. Yeah. Yes, and one student was asking, ma'am, should we bother our recommendation? Should we About what? bother? Should we bother about our recommendation? Recommendation. Hmm. थोड़ा बहुत तो नर्वसनेस होगा यार, इतनी मेहनत Right. करी, इतना प्रिपेयर किया है, वो तो नेचुरल है, लाइक Exactly. but you really shouldn't bother about it. Just give your best. Give Right. your best and enjoy. Limitless. So I was saying, just Then- enjoy your SSB also. You know, like it's very enjoyable. Discrimination about gender, Harsh. Sorry, Ankush. You know, educated people, yes, they do it. I have faced it in normal functioning of life. I have faced it. Yeah, in fact, I say that army gave me the strength to squash them all. Right, right. But it's there. Like my training helped me, like because I knew that I'm not less than anybody. I can come excellent in my BPT. I'm a marksman and firing. Who are these people? So what do you do with that? You don't have to waste your time dealing with those people. You know, like ignore and just look at your goal. Focus. You guys need to focus and stop bothering so much about things. Yes, ma'am. Next question is, how can we overcome procrastination? It's procrastination is like, you know, it bothers all of us. हम सबको लगता है कि अभी नहीं, आज नहीं तो कल कर लेंगे. एक बहुत पुराना कबीर की कहावत है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रे होएगी, बहुरी करेगा कब. सिंपल. Right. कल नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, तुम नहीं करोगे अगर, और ज्यादा डिले करोगे तो तुम भी नहीं कर पाओगे. फिर Yes. डिसाइड करो कि जो चीज तुम करना चाहते हो तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है. यू नो, अपने आप प्रोक्रास्टिनेशन चली जाएगी. एंड स्टार्ट डूइंग इट विद सिंपल थिंग्स कि मैं अभी थोड़ी देर में पानी पीती हूँ, मुझे प्यास लग रही है बट थोड़ी देर में नहीं, मुझे प्यास लग रही है, मैं अभी उठ के पानी पी के आती हूँ. ये छोटे छोटे सिंपल एक्सरसाइजेस शुरू करो. Then you will start overcoming it. Yeah. I'm not able to clear my SSB stage. One, according to me, I performed well. What can be the reason? I'm not able to clear my SSB stage. And I performed well. What could be the reason? See, I'm not even. So the thing is, what was the name of that person who asked that question? Adventure enthusiast 14. Adventure enthusiast. अरे पहले नाम तो सही से लिखा करो यार तुम. भाई नाम टाइप करो अपना. Adventure. हाँ, मेरे सवाल पूछते क्यों नहीं हुआ, अपने से क्यों छुप रहे हो. Right. You know, yeah, like so the thing is क्यों नहीं हुआ. मैंने अच्छा किया था तो थोड़ा you'll also have to leave it on the system and the people who are assessing you, and sometimes just you know फौजी बनना है ना तो इतना चीजों को पकड़ नहीं सकते भाई. Start letting go of things. जब फौजी बन जाओगे बहुत चीजें होंगी ट्रेनिंग में, बहुत टूटेंगी हड्डियां, बहुत गिरोगे, बहुत गालियां सुनोगे. ऐसे पकड़ के बैठ के लग गए ना तो फौजी नहीं बन सकते. Right, right. वो गाना जो सुना है कि हाँ, छाया सिंह, हाय छाया, सच अ लवली नेम यू हैव.
So you had a good SSB, and you think that you performed well, but it didn't happen. So start introspecting because we know all the answers. Right. Now to introspect also, you need to focus, go through your process. If it is that important to you, if it is bothering you that much, go through the whole process. You will know. जहाँ पे कुछ ऑफ हुआ होगा, you will know कहाँ पे ये ऑफ हुआ था या क्या हुआ था, and you just need to go back and take whatever happened, everything like one by one. Just go through it. You will know, and then you can work on it, improve it, and then clear it next time if you want to appear again at all. One student asked that how can we inculcate OLQs in ourselves? What? How can we inculcate OLQs, officer-like qualities in ourselves? I recommend that you start practicing them in your life for real. Okay? Honesty, helping others. It's good fun. You will learn a lot of life lessons. Apart from just joining the army, if you really start practicing OLQs in your day-to-day life, initiative, it will change your life for good. Not just help you. Don't just look at short-term gains that if I remember these things for SSB, I'll get to SSB. Always look at the bigger picture. Always think that how will this change my life? If I actually become honest, if I actually start helping others, if I actually start taking initiatives to do new things, you know, and you will develop OLQs. Right, ma'am. Lokesh asked, ma'am, I am preparing very hard for NDA, but when I read about SSB, when I become nervous because there is only one out of 50-60, by only one out of 120, 200, ठीक है, ये रेशो है. यार इतना तुम लोग क्यों जाके I just don't get it. थोड़ा सा ignorance is bliss. थोड़ा सा practice that also. Exactly. I'll share something. Yeah, don't start getting so much into statistics and figures. Just focus on your performance, your exam, your result, Right. your obstacle training, your SRTs. You know, किसके कितने मार्क्स आ रहे टॉप 20. जैसे मेरा फाइनल सीडीएस का मेरिट लिस्ट बना था 20 का, तो मैं कोच थी तो मैं भी गई अकेडमी, जो 20 पे थी वो भी गई अकेडमी. So stop looking so much around you. Okay. Yeah? Okay. ठीक है मैम, आप Focus. क्वेश्चंस तो आई थिंक खत्म हो गए. थोड़ा मैम ओटी की कहानी सुना दो इन्हें, कुछ मजेदार कहानी ओटी पे. ओडीए की कहानियां, अरे यार, तो यू तो नो कि अगर हम लोग एक बार कहानी वहानी करने बैठे तो कहाँ, फिर मेरे को लगेगा अरे जल्दी खत्म हो गया लाइव सेशन. सबसे ज्यादा हम लोग की ना रैगिंग नहीं, मतलब रगड़ा बहुत होता था. इट्स नॉट कॉलेज, रैगिंग नहीं हो रही हमारी वो क्या कहते हैं, लोहार. कभी ड्रिल उस्ताद, कभी हमारे इंस्ट्रक्टर्स, कभी हमारे पीटी उस्ताद, कभी हमारे सीनियर्स. मतलब चैन की सांस तो भूल ही जाओ जब अकेडमी जाओगे. पनिशमेंट्स, उसमें पनिशमेंट दौड़ते रहो 3 किलोमीटर 11 मिनट में खत्म करने, इतना बड़ा बैग और राइफल लेके, यू नो. लेकिन उस जैसे मैं बहुत रिस्ट्रिक्शंस पे रहती थी, तो फिर मैं बहुत अच्छी रनिंग में एकदम बहुत एक्सीलेंट हो गई. मतलब हर चीज में, हर कॉम्पिटिशन में फर्स्ट इंक्लोजर में आने लग गई. तो हर चीज का वही पॉजिटिव साइड देखने के लिए हम लोग को संडे को कभी पनिशमेंट भी अगर लकी नहीं हुए तो कैंटीन जाने को मिल जाता था. और नए 6 पे कमीशन आई थी, स्टाइपेंड आती थी, के सब कैंटीन जाते थे. कैंटीन इतना बड़ा कैंटीन होता था अकेडमी में, सब खाली हो जाता था ऑलमोस्ट संडे शाम तक. फिर आइसक्रीम पार्लर होता था जो कि सिर्फ सेकेंड टर्म में अलाउड था. मतलब एज अ जूनियर यू वर नॉट अलाउड टू हैव आइसक्रीम. तो जैसे ही हम सेकेंड टर्म में आए, एक डब्बा लेके सबके सब खड़े हो गए आइसक्रीम. मतलब 1 साल से आइसक्रीम नहीं खाया तो आइसक्रीम ही खाते रहते थे सब मिलके वहां पे. फिर फर्स्ट टर्म में खाना जैसे डिनर खत्म, डिनर पे जाते टाइम भी हमें हमारे जो सार्जेंट्स होते थे ड्यूटी पे, सीनियर्स, वो सबको रोक के पहले अकेडमी का गाना सुनते थे.
ठीक है, हमारा डिनर टाइम भागे जा रहा है और वो हमारा सीनियर है सेडिस्ट का मजे ले रहा है, गाना चलो चलो गाना गाओ, गर्ल स्क्वाड चलो शुरू हो जाओ। हम यहाँ पे भूखे प्यासे पसीने में और गाना गा रहे खड़े होते सावधान में, ठीक है। और ये सब बड़ी किसी की वो स्लिप्स होती है, मतलब आप पॉकेट में लेके घूमते हो अपना एलसी नंबर, जैसे मेरा एलसी नंबर था 1606P फिलोरा कंपनी, ठीक है। तो उसके बाद Flora हाँ, company. Great. My SSB mentor Nirmal Tanwar sir is also from Flora company. हाँ पहले फिलोरा कंपनी जीसी कंपनी थी, पहले फिलोरा जीसी कंपनी थी एंड देन इट बिकेम एलसी कंपनी लेटर ऑन। Okay. Great. या आई रिमेम्बर मेरे सीनियर्स जो कि कोहिमा में चले गए थे, उनके पास फिलोरा की टी शर्ट बचती भी थी, क्योंकि आई थिंक एसएस 86 के टाइम ही फिलोरा को एलसी कंपनी बना दिया था। तो जब भी हम टी शर्ट पहन के भागते थे ना, हमारे सीनियर ऐसे देखते थे, कहते थे अरे क्या यार हमारा टी शर्ट पहन के भाग रही है सबके साथ। तो हाँ, so I was from फिलोरा कंपनी। तो ये हमारे सीनियर्स बड़े मजे लेते थे। फिर मिड टर्म ब्रेक होता था, वहां सब लोग ऊटी, कोई बैंगलोर जा रहा है, हालत तो खराब होती, भले आप बहुत चुजर हो जाते हो एंड यू आर अ स्मार्ट कैडेट, बट रंग रूप अरे बाल वाल सब कुछ तो लड़की हो तो अब देन यू आर नॉट अ गर्ल एनीमोर एंड देन बॉयज यू आर नॉट अ बॉय एनीमोर, यू आर अ फ्यूचर ऑफिसर। जब मिड टर्म ब्रेक मिलता था तो सब अपने पुराने हीरो वाले कपड़े निकाल के पहनने का मौका मिल जाता था, फैशन। और हम सब भी तैयार हो के अपना घूमते थे, चलो भाई कितने टाइम का तैयार होने को मिला, और ऊटी आए हैं, बैंगलोर आए हैं, तो ये छोटे छोटे मजे अकेडमी में। और क्या, किसी दिन मौका मिल गया तो पंजाबी पराठे खाने, अब चेन्नई में मिलता नहीं है, ऑटो वाला लेके नहीं जाता था क्योंकि हमें उसकी लैंग्वेज नहीं आती थी। अन्ना 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 कर करके मना के जाते थे हम लोग ये पंजाबी पराठा खाने, शुगर एंड स्पाइस के पास एक मॉल था। तो यही है, पनिशमेंट और दौड़ रहे हैं, कोई कोर्स में गिर रहा है तो उसको उठा रहे हैं 30 किलोमीटर जोश रन में, गालियां सुना रहे हैं उसको कि अगर तू ड्रॉप आउट हुई तो ये हुआ, साथ में मिल के बचा रहे हैं एक दूसरे को, मार खा रहे हैं, मतलब गिर रहे हैं, रोलिंग कर रहे हैं। 2 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक वो यूनिफॉर्म रिग चेंज वाला रगड़ा हो रहा है, एजुटेंट कर रहे हैं आज। तो अकेडमी के तो पी हिल होता था एक ओटीए में, ऊपर मतलब पहाड़ के जैसा पी हिल। तो जब हम सबका रगड़ा कर करके हम एकदम बेहोश होने वाले होते थे ना, तभी हमारे एजुटेंट कहते थे पी हिल टच एंड बैक, एंड वी वर लाइक ओह शिट, अभी तो बेहोश होने का टाइम था एंड नाउ वी हैव टू गो टू दैट पहाड़ एंड कम बैक। सो अकेडमी के किस्से तो कभी नहीं खत्म होंगे, आप 60 साल के भी हो जाओगे वो दिन याद रहेंगे, आप 70 के भी हो जाओगे याद आता रहेगा कुछ ना कुछ हल्का फुल्का, अल्जाइमर हो जाएगा तब भी याद आएगा, मतलब वो तो ऐसी ट्रेनिंग है, इतनी पक्की ट्रेनिंग होती है फौज की। ग्रेट। मैम एक चीज पूछनी थी, जैसे 30 किलोमीटर का जोश रन होता है, तो मतलब कैसी आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ आ रही है। यस मैम, जैसे 30 किलोमीटर का जोश रन होता है, ठीक है। सो लेट अस सपोज आप लोगों ने 5 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है, सो बीच में वो आपको थोड़ा बहुत रेस्ट देते हैं या फिर कंटिन्यूअस धीरे धीरे चलते रहो? नहीं, कोई रेस्ट थोड़ी होगा, रेस्ट होगा तो फिर एक तो स्पीड भी टूट जाएगी और फौजी ट्रेनिंग में रेस्ट थोड़ी मिलेगा। फिर बीच बीच में पोस्ट लगे होते हैं नींबू पानी पीने के, और हाँ वो भी दौड़ते दौड़ते पियो भाई, या 1 मिनट रुके 2 मिनट रुके तो रुके, वो रेस्ट वाला सीन नहीं है। वो बीच बीच में 5-5 किलोमीटर में ऐसे टेबल में लगा देते हैं, चेयर लगा देते हैं, उसमें नींबू पानी रख दिया, इलेक्ट्रोलाइट रख दिया, और खाने की कुछ हल्की फुल्की बिस्किट रख दी कि दौड़ने में रुकावट ना हो, वो खाओ अपने पॉकेट में डालो और घूमते रहो। और क्या कहते हैं, और जैसे लाइक अगर ग्रुप जो है थोड़ा ढीला पड़ रहा है, आई होप आप लोग के साथ इंस्ट्रक्टर एंड ऑल रहते होंगे एंड दे मोटिवेट यू, मतलब आपको चार्ज अप करते होंगे बाय चैंटिंग दिस हाउ द जोश एंड ऑल, है ना? हाउ द जोश एंड सुनाने के लिए दोनों यू ब्लडी यू रन फास्टर इफ वी लूज, ओह गॉड। हाउ द जोश तो बाद में होता है, जीतने के बाद, और जीतने के बाद भी चलो पुशअप्स, एंड देन सारे फ्लोरा की लड़कियां फाइटर फिलोरा गिर रहे हैं रनिंग करके, मरे बड़े
लेकिन पुशअप्स चल रही है, फाइटर फील हो रहा, तो भाई सेलिब्रेशन भी वैसे ही होती थी. But it was good fun. In fact, after commissioning also, we all did push-ups. That's the norm in calls. You know, push-ups करो चलो, जमीन धरती माँ को थैंक यू बोलो. Yes, इसी के हवाले होने वाले हो तुम सब. बस. and now this. We have asked how to develop our personality. Okay, so Karthik is asking that how to develop our personality. So the thing is, yeah, Murad. Personality development is one is that you just focus on whatever career you want to make in life, okay? And second is also show interests in things that make your society and yourself. Now, if you really want to develop a personality and have a good personality, then apart from just taking interest in your career and in your your personal pursuits, I won't call it selfish, your personal pursuits, you should keep your eyes and ears open. You should observe what is happening around you. You should pay attention. So, and you should work out. You should, even if you're not in the army, you should still have a basic workout because it builds your mind and your body. Running has made a lot of difference to me, and so I can vouch for running. You should read a lot of books. You should know about things like how social media also works. Not all of it, but little bit of idea of everything. And you should read a lot of books. You should talk properly to people. You should watch good things. You should consume good whatever videos, documentaries, films are there of different languages. I've been doing a lot of that. Once I started getting time for that, not just Hollywood, but I've been consuming the movies of different countries also. Spanish, Turkish with subtitles, everything. It builds your personality. When you get to travel if you get time. Always invest in traveling. When you meet people of different kinds, you understand that दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, दुनिया में your mind opens up. So do all these things. Okay. What are the things to keep in mind while SSB? You should be cool-headed. Your presence of mind should be good. आपका mind बिल्कुल आप प्रेजेंट सिचुएशन में रहो. उस टाइम इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड कुछ नहीं होना चाहिए दिमाग में. ब्रेकअप हो गया तो भी नहीं. कल ही ब्रेकअप करके आज आए हो अपने एसएसबी के लिए तो भी नहीं. You should be so focused. Sorry, I'm getting a call. Yes, Focus. I will. Yes. For your SSB, just focus. That's it. आपके इंस्ट्रक्टर क्या बोल रहे हो? जो मेजर साहब वहाँ पे खड़े हैं, वो जो उस्ताद वहाँ पे है, वो जो just listen to them and use your brains. Right. Be Ma'am. present. Be mentally present. Yes. Audible, ma'am. आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ मेरे को आ रही है. What Ma'am, actually actually, prepared before? मैम आपका ना वीडियो मेरे स्क्रीन पर लोड हो रहा है. लाइक आपका वीडियो ऑडियो तो आ रहा है. सो कैन यू प्लीज जस्ट रीजॉइन अगेन? Rejoin? Okay. हाँ, yeah. Okay, guys, just wait for a few seconds. Okay. Am I clear? I'm not able to clear my SSB stage 1. According to me, I performed well. ये वाला तो क्वेश्चन हो गया था ना? Yes, ma'am, हो गया था. Okay. हाँ. So what I told Chaya was that she should go back through the whole process again and
analyze everything, and she will start getting hints and ideas that what did not or could not have worked out for her. Yes, ma'am. मैम आपका वीडियो आई गेस अपलोडिंग स्टेज में है, मतलब व्यूअर्स को नहीं दिख रहा है मैम. Can you see me now? गाइस कैन यू सी मैम नाउ? मैम का वीडियो दिख रहा है आप लोग को? हाँ, Kaushik can see me. Okay, okay, fine, fine. Okay, ma'am, great. Continue, ma'am, continue. Hi, Kaushik, welcome. Kaushik, sir. Yes, ma'am, now visible, ma'am. Visible? Yes, ma'am, yes, ma'am. Continue, ma'am. ठीक है. हाँ, तो ये वाला तो हमने क्वेश्चन एड्रेस कर लिया था कि एनालाइज करो वापस जाके कि जिस दिन शुरू से कि जब हम एसएसबी सेंटर पहुंचे थे, ऐसे हुआ था, इंस्ट्रक्टर ने ऐसे बोला था, फिर वो हमारे साहब आए थे इंस्ट्रक्शन देने के लिए, फिर हम कलीग के साथ ये बिहेवियर था हमारा, हमने सर को ऐसे जवाब दिया था, हमने साहब से ऐसे बात की थी. ऑलवेज स्माइल, ओके? Right, ma'am, right. एंड यू कैन स्माइल रियली, मतलब नकली वाली स्माइल नहीं, जेन्युइनली आप तभी स्माइल कर सकते हो जब आप सच में खुश हो कि हम एसएसबी सेंटर आए हैं. आप नर्वस रहोगे तो वो दिखेगा. नर्वस होने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भी नर्वस थे, लेकिन हमेशा स्माइल करने की कोशिश करो, एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहो. Okay. So, ma'am, now और we are left सबसे with. रिस्पेक्टफुली सबके साथ तरीके से बात करनी है, यू नो. वो ऑलिव बाय, वो जैसे मैं इलाहाबाद गई थी तो कैंटीन भी जो था, हम वी वर लाइक जस्ट बी नाइस ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट बिफोर यू वांट टू बिकम ऑफिसर्स, यू नो. बी नाइस टू पीपल. We are left with only less than 4 minutes now. So quickly ask any doubt, guys. Ma'am, what will you advise me as a young NDA aspirant? कितना कुछ तो बता दिया भाई. तुम लोग पता नहीं एक ही सवाल पूछते हो. एनीवे, फिर बोलते हो मैम जवाब नहीं देती. एनीवे, सो प्रिपेयर फर्स्ट, क्लियर योर रिटन एग्जाम एंड फोकस. Guys, Yeah, I right. want all of you to get off social media if you're really preparing for your NDA, IMA, OTA examinations. Right, ma'am. You should get off this all the news, drama and gossip, whatever is happening on media and everything, and focus on your studies, your entrance examination. And once you clear your entrance examination, किताबें पढ़ो अच्छे से, उसके बाद एसएसबी के लिए प्रिपेयर करो. आप जब एसएसबी के लिए जाते हो, be mentally present. Listen to what people are telling you to do. Yes, ma'am, Don't you're right. give your ideas and suggestions because they are experts telling you what to do. You are right. Yeah. Can we join Indian cricket team after joining Indian Army? Why not? Yeah, I mean, we were just discussing Major Dhyanchand was an army officer. He represented the Indian hockey team in India level. अब मुझे क्रिकेट का नहीं पता यार, यानी कि क्रिकेट का है आर्मी से कि नहीं है. अंकुश would know better. Cricket, ma'am. First of all, guys, you can do one thing. After joining army, you will be given chance to join services team. एक services की team होती है. आप उस level पे खेलो, रणजी level पे खेलो, है ना? Then after that, you can also join Indian cricket team, है ना? उसके बाद तो पहला स्टेप होगा आपका सर्विसेज की टीम को कैसे ज्वाइन करें. ठीक है? हाँ, सर्विसेज टीम ज्वाइन करना भी बहुत बड़ी बात है. Yes. Yeah, I had a senior in AFC. He was in services team hockey. Oh, that's great, ma'am. NDA, Great. ex-NDA, IMA and services team hockey, हरियाणा से. कौशिक पूछ रहा है व्हाट अबाउट बॉल पार्टी. बॉल पार्टी तो क्या मतलब, करो डांस करो अपना. आप अकेडमी में हो तो everybody is happy that today we'll get to dance. And if you have a crush on a girl, if you're in OTA, you can ask her, will you please be my ball partner, very courteously, like a gentleman, you know, charming. The thing about if you're going to become an army officer, be charming, you know, girls, boys, both. Right. So, ma'am, from where did you do your schooling? आपकी schooling कहाँ से हुई है?